Hi guys, welcome to Citizen Mentis. Can you all hear me? Can you all just confirm if you all can hear me quickly? Hi guys. Okay, we'll wait for like 30 odd seconds and then we'll begin. Just a confirmation would be fine if you all can hear me out. Okay, I think I'm live now. Okay, fair enough. Okay, okay, let's get started. So those who have got calls, yeah, hi. Those who got calls from those who are eligible for cap rounds, just put in that. Okay, yes, we got a call. We got a call. We got a call. You can just tell me, where, like, what you will like. I mean, whether you're category or open category or like whatsoever. Okay, I'll try to answer your questions, whatever questions that you have. We'll try to spend some time with you guys because I think IIM Bangalore calls are also out, if I'm not wrong. I'm not sure. I think it's only for PGP that the calls are out, but not for the PGDP, right? So if anybody has got, just kindly confirm if they've actually released the calls or not. Okay, moving ahead, who all we have today? Okay, Anand is there. Hi, Karthikeya. Hi, Pradeep. Okay, guys, let's get started. Hi, Vinay. Hi, Anand. Hi, Rahul. Okay, cool. I hope you guys have got a calls for CAP or let's say Indore or Lucknow, whatever, right? Yeah, hi, Pradeep. Which call you have, Pradeep? So, okay, so I just thought I'll have a quick session because CAP rounds, I'm Indore and I'm Lucknow के बारे में people really want to know कैसे करना है social but baby IIMs versus IMD college comparison थोड़ा बाद में कर लेते हैं यार let's try and understand कि preparation कैसे करनी है अभी फिलहाल because that preparation is going to be an important thing so don't worry about the college once you convert to a lot of colleges फिर हम बैठ के सोच सकते हैं कि चलो अभी हमारे पास इतने इतने options हैं और अभी हम ये सारे calls के लिए probably थोड़ा सा मेहनत कर सकते हैं okay now those who've got calls for cap rounds and all that. Very quickly, I'll tell you. Cap rounds के बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे. Let's start with the Indore and Lucknow. ठीक है. Now, okay, IMB has actually released the calls, right? Isn't it? So Trishan, are you sure that Bangalore has given the calls? Not. I think they have given the calls. Anyway, fine. Now, what one should be doing from today onwards because cap rounds are out. L is out, I is out, मेरे ख्याल से A and B is also out. Right. Questions from FEB program. No, don't ask me FEB program questions now, beta. This is the class only for GDPI. Probably FEB questions I can take a little bit later. Now, moving ahead. So mostly all the IIMs are going to call. Calcutta का calls मेरे ख्याल से 2-3 दिन में आना चाहिए because I think Calcutta has sent an email to students to do some changes in the last year ka percentages, if I'm not wrong. I think very selective Janta has got it because people have now started getting their mark sheet. So I'm Calcutta thought giving them a chance to kind of make some changes. So मेरे ख्याल से mostly ये 20 IIMs तो हो ही गए, एक या दो ही बाकी है, right? Now moving ahead, when you begin your preparation for all the IIMs predominantly or for cap round as such, I will be taking your questions, guys, side by side. So if you have any question, feel free to ask me, sir. ये IIM का क्या scene है and all that. Right now, let's begin with your preparation first of all. See, there needs to be a proper preparation for your interviews. अब a lot of बच्चे लोग get confused कि यार करना क्या है. A lot of people get overwhelmed, कि यार अभी कैसे करें क्या करें. थोड़ा सा easy इसको लेना जरूरी है. इतने ज़्यादा high फंडा चीजें करना जरूरी नहीं है, but preparation should be serious. When you talk about BLACKI as a cluster, BLACKI more or less उनके interviews kind of formatted होते हैं. I mean, they do not change a lot of process of theirs, so they'll keep it very simple. जैसे उनका एक फंडा होता है, उसी में वो चलेंगे, right? Now, for cap round is a little weird, by the way. Not that much, but cap round थोड़े से ज़्यादा rigorous level पे चलते हैं, थोड़े से stressful होते हैं cap rounds. I'll share a doc with you जहाँ पे I'll show you what kind of questions were asked to students. Number one, get your resume in place, right? Period. Like get your resume in place. जो भी resume पे लिखा है, make it a point that you understand it very well. ऐसा ना हो कि resume पे लिखा था उसके बाद पता ही नहीं चला. Genuine thank you, sir. VRC workshop was so amazing, helped me a lot. Harsh Srivastava, really appreciate your feedback. Thank you so much, बच्चा. Now, moving here, 82 पे EWS category पे होगा conversion cap में definitely. See, because मुझे लगता है कि now these guys are not taking VAT anyway, right?
तुम्हारा वैट तो मेरे ख्याल से इन लोगों ने स्क्रैप करा है, दो देयर इज नो इंटीमेशन अबाउट इट, बट आई बिलीव दैट दे हैव स्क्रैप्ड वैट. Now when you look out VAT not being there, the maximum weightage will be given to your personal interview, because I was like, I mean, like, I came to know that your Raipur and all said that no for VAT, but we're still not sure. Let's wait for the final confirmation. 21st January is the final day to fill in the forms, and then there will be a couple of phases for your interview rounds and everything. Now, number one, get your resume in place. जो भी आपने लिखा है resume पे, that is something you need to kind of validate or justify now. So get all your certifications in place. All my bacha log, those who belong to EWS, PWD category, NC, OBC, SC, ST, you need to have all your caste certificate in line. बहुत सारे बच्चे मुझे messages करते हैं, पूछते कि कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी क्या होगा, मेरा 2016 का है, 17 का है, वो 2021 में चलेगा क्या? तो यार ये थोड़ी सी चीजें हैं जो देख लेना, बिकॉज ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एंड यू डोंट रियली वांट टू स्क्रॉल ओवर द डॉक्यूमेंट्स, राइट? सो ये चीज आपको करनी है टू बिगिन विद. I would always tell you the best thing, to begin with your preparation, you need a kind of a eye opener, और एक थोड़ा सा झटका जरूरी होता है, एक थोड़ा सा एक सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी होता है. So I'll always tell that कि start with your resume. आपका resume आपको बहुत सारी चीजें बताएगा. It will either gonna make you feel good or it's actually gonna make you feel bad. In whichever case you have to work on your resume, there is no alternative to it, right? तो पहले अपना resume देख लेना, अपने academics से चालू करना कि भाई मेरे academics थोड़े से डाउन हो गए 12th standard में, क्यों हुए हैं? Do I have a valid reason for that? If you're a C2C mentors का student, you can discuss those reasons with me and or me with or my mentor, जो भी हमारे mentors हैं उनके साथ you can discuss, and then you can kind of validate your answers कि हाँ चलो ठीक है, किसी ना किसी ने मुझे यहाँ पे green signal दिया है, I'm good to go ahead with this answer. I got L and I calls, can expect K as well, definitely यार, definitely Indian mark. अगर तेरा eligibility तो तूने already clear करा होगा, अगर form अच्छे से भरोगे मेरे ख्याल से you should be fine. Guys, can we have some likes please? Can we have some likes please? Yeah, let's move on. So start with your resume. पहली बात देखो क्या क्या resume दे, internship के बारे में क्या है. I'm not sure how many of you have seen the video posted by me on my channel, which talks about internship. So उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करूंगा. इंटर्नशिप के बारे में देखो, अगर ये राइट टाइम है आपके पास, अगर आपको कोई सर्टिफिकेशन करना है आप बिंदास कर सकते हो. यू माइट वांट टू वेंचर इनटू अ सर्टिफिकेशन, एक सर्टिफिकेशन के लिए एनरोल कर दो. अगर आपको फॉर्म फिलिंग करना है, अगर वो पूछते हैं कि यार कोई सर्टिफिकेट करा है क्या फाइनेंस वगैरह के लिए, राइट, देन यू कैन डेफिनेटली राइट इट बिकॉज यू हैव टाइम, राइट? Even if you enroll for a certification tomorrow, 15 दिन में वो सर्टिफिकेशन आप कर लोगे, एटलीस्ट एक आइडिया आपको आ जाएगा, राइट? सो यू कैन डू दैट, लाइक if wherever it is possible, try to do that. Add some certifications if you can. How to be a part of C2C? Anuja, beta, I'll put the link after the session. You can click whichever call you have, you can move it. So मेरे ख्याल से doing that thing is very much important, because ये जो भी आपका PI होगा अभी से आगे वो थोड़ा सा रिग्रेस हो सकता है. मैं आपको कैप राउंड्स के क्वेश्चंस बताऊंगा. दे आर रियली ऑन अ लिटिल बिट वियर्ड लेवल. So fine. So to begin with, start with your resume. The second important thing that I believe for all the IIMs, for 20 IIMs, is that having a good hold on your academics. Having a real good hold on your academics. If not a good hold on academics, at least you should know कि तुम्हारा favorite subject क्या है. Right? At least no. ISP में cap rounds we are not taking, beta. So I'm sorry for that. ISP is a different. ISP is only BLACKI, FMS Excel and XP Gens, right? We'll talk about ISP a little bit later. Fine. So I was talking about, I don't know, I forgot that point. Anyway, GDPI will happen online or offline. It has to be online, beta. I would love to conduct offline sessions, but it has to be online as of now. Let's see, Maharashtra government का verdict अभी आना बाकी है, 20th Jan को आएगा मेरे ख्याल से. Fine. So academics पे आपको थोड़ा काम करना है. Most of the time, I have seen in personal interview that as a finance का बच्चा or maybe as an engineer, if we are asking you some question, you hesitate to answer because you don't know it, and that is the reason. How do you tackle this? Because academic question, beta, they are going to be pain in ass. जैसे I remember, I am इंदौर में last year एक बच्चे को पूछा गया था, what do you mean by triple P? What do you mean by triple P? It's a purchasing power parity, right? It's a very simple thing, right? It has something to do with the exchange rate. ये जानना आपको बहुत जरूरी है. किसी को पूछते हैं, वो पेटेंट क्वेश्चन होता है,
कि शेयर कैपिटल तो कंपनी का it's called as capital, right, for a company. There's no IT sitting on a liability side. कुछ भी क्वेश्चंस आएंगे, मे बी इंजीनियरिंग के जो क्वेश्चंस हैं, सो वी हैव मेंटर्स, लाइक आई एम फ्रॉम अ कॉमर्स बैकग्राउंड, आई रियली कांट टॉक अ लॉट अबाउट इंजीनियरिंग, बट देन वी हैव मेंटर्स, दे आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. मनोहर है, सृष्टि मैम है, पूजा मैम है, ऑल दीज गाइज आर देयर फ्रॉम okay, suggest how to improve. Beta, you need to hold. I'll tell you. Profile, I'll give you that stuff in bits and pieces. Hold on for some time now. You are a BCA student. I understand. थोड़ा सा आपको ये jargon लगेगा. मेरा भी हाल सेम होता है जब मैं engineers के बच्चों से बात करता हूँ, वो जो कुछ concepts पूछते हैं, but I go bonkers. So just wait for some time. So the point is that you need to understand, like I was saying that, you know, our mentors, जो भी हमारे mentors हैं, they're from engineering backgrounds. We anyway gonna create a doc, mechanical, probably civil, you know, IT वाला बच्चा लोग, and you're gonna plot the most important concept from that domain, particularly for finance and economics and commerce, BMS. I will be doing that. So even if you do those concepts, you should be fine. So if not the whole syllabus, 4-5 साल का या 3 साल का, at least you should be in a position to tell them, you know what, this is my favorite subject. I do not understand economics, being a finance guy. Accounting is my strong point. Costing is my strong point. Asking something on that, because these things people don't say, and then interview में पंगे हो जाते हैं. Will you start GDPI VAT for CB based calls? Sunay Saha, we already have started taking the enrollments. We've got around about 70 plus students studying with us for Symbiosis only. So you can join for Symbiosis. Anyway, coming back to this. So in your introduction, आपको वो fit करना है कहीं ना कहीं. अभी ढूंढो. Now try to understand कि यार in my introduction मैं कहाँ पे कह सकता हूँ कि मेरा favorite subject ये है. तो आपको बहुत strategically खेलना पड़ेगा. You know what? You won't believe. You can literally trap your interviewer. बहुत सारे बच्चों को ये पता नहीं होता. बच्चों को लगता है कि you know what, सिंपल सी बात है यार, इंटरव्यू है, क्या करना है, बस जाके बात करनी है. I'm just gonna go there, I'm gonna talk to people, I'm just gonna tell them about, you know, मेरा नाम ये है and all that, and I'll be out. ऐसा नहीं होता. You need to put in a lot of efforts, because personal interviews are going to be the game changer, because VAT ये लोग निकाल रहे हैं, GD इन लोगों ने already निकाल दी है. VAT में थोड़ा सा चांस था कि आप लोग अच्छा करोगे. कैट का स्कोर अगर आपका थोड़ा सा डाउन है तो बेटा पर्सनल इंटरव्यू is going to be the game changer. So you need to now work a lot on your personal interview kind of thing. Now moving ahead, academics को थोड़ा टैकल करना है. करंट अफेयर्स बहुत मैटर करते हैं. आई रिमेम्बर एक स्टूडेंट था हमारा, उसको लास्ट ईयर एक वियर्ड क्वेश्चन पूछा था. आई इंदौर में उसको पूछा था वेस्ट इंडीज का नेशनल एंथम क्या है, उसको वेस्ट इंडीज किस आइलैंड से बना है, वो चीजें पूछी गई थी. नाउ कम ऑन, आई मीन हाउ डू यू आंसर दिस, राइट? दिस इज समथिंग आउट ऑफ लाइक यू नो लाइक नोबडी कुड एवर थिंक यार मुझे ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है. तो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस आते हैं और एक क्वेश्चन आपको थोड़ा स्ट्रेस दे जाते हैं कि शिट यार आई कुड नॉट आंसर नाउ, आई एम गोना परफॉर्म इन द इंटरव्यू. So this is something you need to keep in mind when you kind of move ahead. There is a lot to talk about interviews. You guys can ask me question, I can take them one to one. Can you check one-on-one resume if we join Solution Mentors? We already have 150 students in ISP program. Scattered away में है. Checking resume one-on-one is not going to be possible. But if you feel that you have a really problematic resume, अगर आपके resume में ज़्यादा चीजें हैं नहीं, then probably you can discuss that with us. We have mentors, जैसे I take Zoom sessions, I take questions one-on-one. तो वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि ये bare minimum चीजें आपको करनी ही करनी है. और जब mock PA होगा तब तो यार हम आपको मतलब आपका resume हम देख ही लेंगे. That's not a problem. NMIMS CDPI is also on. You can join in beta. Not a problem. I am unable to understand if I should start GDPI prep now or after I have any calls. Vivek 47 beta. Always remember, you need to start your GDPI right now. I'll give you a royal example. पहले से लोग मतलब कुछ ये मेरा एक्सपीरियंस रहा. पहले स्टूडेंट कहते थे कि कैट डिले होगा, चिल मारो, आराम से मेहनत करो, राइट? बाद में पता चला कैट इज नॉट गेटिंग डिलेड, फिर आपको टाइम कम पड़ा. You have to start your preparation for GDPI right now. It's a good value addition. It's a good value addition to you also as a person on for your resume also. So मेरे ख्याल से वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. Fine. So there is a lot that we can talk about. You know, this session can literally go for like 2-3 hours if I want to cover everything, but we can't do that anyway. So I'll quickly share a doc with you in which I'll kind of show you what sort of questions were asked. So if you're joining C2C Mentors for this, you are anyway gonna get these docs uploaded in your dashboard, wherein you will have a fair idea कि यार यहाँ पे क्या क्या पूछा गया है.
So let's have a quick look at this one of the doc. I think this is for IIM Lucknow, if I'm not wrong. Okay, so let's have a look at for IIM Lucknow. What are the things were asked last year? These are the common questions. Tell me about yourself. Tell me about yourself. Now, आपको ये लगेगा कि ये question बहुत ज़्यादा simple है, but actually आपका 50% personal interview is taken care by this one single question, and a lot of people do not talk about it. I mean, a lot of people just talk about, okay, I've made this, I've made a mention about this couple of times. They just start with, my name is XYZ, I belong to this city, from this district. I was earlier based out of XYZ place, and then I moved, so on and so forth, right? So, mere khayal se, if you are gunning for cap round, or if you are gunning for your KIL ka or ABC ka interview from now onwards, it's quite important for you all to be very, very particular about telling me about yourself. Because as a panel, मैंने 99.99% of the time देखा है, एक normally किसी को पूछो tell me something about yourself, and people would say that, my name is XYZ and I belong to this city. Should not do that, because that's very much monotonous. That will not initiate any kind of a conversation, because we always go for interview as if it's an interview. But trust me, you need to kind of raise the bar. थोड़ा सा आपको ऊपर सोचना है कि यार, it's not an interview, it's just a business meeting, right? Somebody is going to be there who's going to be asking me some question, and it is my time to explain them about me. Imagine how embarrassing it is if you as a student not able to explain yourself very well. You getting my point? तो ये जो छोटे छोटे questions होते हैं, ये make or break होते हैं. लोगों को लगता है कि tell me about yourself बहुत simple है. When we were preparing for our GDPI, back in those days, इतना क्लीशे वे में पढ़ाया गया था कि आपका नाम बता दो, आपके फैमिली के बारे में बता दो, ये बता दो, वो बता दो, आपका स्कूल बता दो, कॉलेज बता दो, आपका ब्रदर के बारे में बता दो. I strictly tell my students in the interview, you can check my previous video also, I strictly tell students, you should never ever talk about your family, should not talk about your brothers, your siblings, should not talk about anybody apart from yourself. So guys, tell me something about yourself. आपको बड़ा पॉलिश करना पड़ेगा. आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, write down your answers, उनके साथ validate करो, उनको पूछो ये सही है क्या. I'll quickly give you something, which is let's say kind of a demo, right? If you were to talk about tell me about yourself, it's always good to give them a story. It's always good to give them a story. अब यार स्टोरी में पता है फंडा क्या होता है. स्टोरी में बच्चों को ये नहीं पता चलता चालू कहां से करें. किंडरगार्टन से करें, नर्सरी से करें, सीनियर केजी, जूनियर केजी, कहां से चालू करें? स्टोरी में से, राइट? दैट्स द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि चालू कहां से करना है. यू कांट स्टार्ट 20 years बैक, राइट? वहां से आप चालू नहीं कर सकते. सो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल कि मैं क्या बोलने वाला हूं. दूसरी बात, एज अ पैनल, ये मैंने खुद फेस करा है, ये मैंने खुद फील करा है. जब भी कोई स्टूडेंट हमारे सामने आके बैठता है, we are always up to ask a question. हमने क्वेश्चन पूछ लिया, कोई मैडम बैठी है, कोई बंदा बैठा है, मान लो यहाँ पे नयन लोखंडे जी बैठे हैं, मान लो नयन लोखंडे यहाँ पे बैठा है, and ask him a question, नयन tell me something about yourself. मैंने ऑलरेडी बोला, because यार when you have worked in corporate and all, आपको भी पता होगा corporate में first नाम से एड्रेस किया जाता है. So it's pretty cool, no? कि नयन just tell me about yourself, and then Nayan saying that my name is Nayan and blah blah blah. It's like, okay, are you serious, man? So 2 मिनट के बाद, 3 मिनट के बाद हमारा जो अटेंशन स्पैन होता है, that anyway gonna go down. तो you need to, फिर लोग बोलते हैं कि मेरा इंटरव्यू तो खाली 5 मिनट ही चला, 6 मिनट चला, 7 मिनट चला, 10 मिनट चला, यार ऐसा थोड़ी होता है. फिर then you start blaming panelists. ऐसा नहीं होता है बेटा. You need to drive your interview by yourself. Trust me यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. आप इतने नजदीक आए हो अभी इन कॉलेजेस के, you do not really want to lose them. Trust me, you do not really want to lose them. So आपका कितना भी परसेंटाइल हो, you might be 99.98 परसेंटाइलर, हमें फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज हम आपको परसेंटेज पूछने भी वाले नहीं है. हमारा काम है कि आपको इवैल्यूएट करना है. जो भी हमारे सामने चीजें हैं, 5-6 हमारे सामने जो भी कैटेगरीज है, उसमें आपको मार्क्स देने हैं, फिर निकल लो, राइट? समथिंग लाइक दैट, राइट? So we really don't look into your academics, I mean your percentile and all that. So tell me about yourself. बहुत अच्छा होना चाहिए. Are you working somewhere, right? Why started working in so young? These are actually good questions, right? Why you started working so early? इसका मतलब क्या कि यार MBA पहले क्यों नहीं कर लिया? Like why you are going for a work? Which specialization would you want to do? अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं.
सो बच्चों को लगता है कि ठीक है स्पेशलाइजेशन में बाद में करूंगा, ये ब्लैकी में चल जाता है, ये कैप राउंड में नहीं चलेगा। ब्लैकी, एसपी जैन, एफएमएस आपके यहाँ पे इलेक्टिव्स होते हैं। सो इवन एज अ पैनल वी विल नॉट एक्सपेक्ट यू टेल मी कि मुझे फाइनेंस ही करना है, यू कैन टेल देम आई एम इंक्लाइंड टुवर्ड्स फाइनेंस लिटिल बिट। एंड ब्लैकी में अगर इंजीनियर बोलता है कि मुझे फाइनेंस करना है, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करना है, दैट्स प्रीटी मच नॉर्मल। 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर इंजीनियर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट, दैट्स प्रीटी कूल। व्हाट आर योर हॉबीज? व्हाट आर योर हॉबीज? ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन ले डूबेगा। हॉबीज अकॉर्डिंग टू मी डू नॉट माइंड इट, बट मुझे ये बड़ा किडिश लगता है। हॉबीज क्या पूछना है, लाइक आई फील दिस इज वेरी किडिश, लाइक आई मीन बट स्टिल ask why people ask hobbies, because you have not given us a chance to ask you anything. Your introduction was so boring that as a panel now I have to ask you stereotype question. What's your hobby? Okay, how old are you? Okay, where you come from? How did you... Boring man, really boring, right? So you need to drive your interview by yourself. अब do not expect me to pamper you कि नहीं बेटा बहुत easy हो जाएगा, कर लेगा तू। हाँ, ऐसे पैम्परिंग में नहीं करूंगा यार, फिर तुम्हारा करियर नहीं बनेगा बेटा पैम्परिंग में, मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, तुम्हारा करियर नहीं बढ़ेगा। एनीवे, राइट, सो योर हॉबीज एंड ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार मैं अपने इंटरव्यू में, मेरे इंट्रोडक्शन में मैं क्या चीजें इंक्लूड करूं कि मुझे हॉबी का क्वेश्चन ही ना आए। दिस इज द रीजन आई से यू कैन ट्रैप द इंटरव्यूअर। You need to be so bloody smart to trap interviewer, and that is the reason people convert IIM Ahmedabad at 90 percentile. People convert cap rounds at a bare minimum percentile. Students with categories, they've got a very low percentile, but still they convert cap rounds in their own respective category. So these are all smart people, right? आगे चलेंगे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे थे। स्पेसिफिक क्वेश्चन, स्पेशलाइज्ड। व्हाट इज बैलेंस शीट? व्हाट इज बैलेंस शीट? The answer can be, it's a very simple answer. A balance sheet is a statement which balances assets and liabilities. That's a typical engineering answer. So you need to understand these things. ऐसा नहीं है कि if you are somebody who is an engineer, I will not be asking you what is balance sheet or something like that. We can definitely ask you कि balance sheet क्या होता है and all that stuff. Right? Moving ahead, GST लास्ट ईयर मेरे ख्याल से जीएसटी का बोल वाला था, जीएसटी के बारे में पूछेंगे, डीमॉन के बारे में पूछेंगे, कोरोना के बारे में पूछेंगे। हमने एक सेशन करा था आईएसपी में, मैंने आईएसपी का एक सेशन लिया था कोरोना के ऊपर। सो वी हैव दिस कंसेप्ट बिल्डर इन सेड्यूसमेंट, जहां पे हम एक टॉपिक लेते हैं और उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देते हैं। सो वी वर टॉकिंग अबाउट कोरोना एंड वी टॉक्ड अबाउट अ लेवल ऑफ कि यार कोरोना जो वायरस जो है उसका जो वैक्सीन है उसकी प्रोसेस क्या होगी, राइट? WHO कैसे साइन करता है एक पर्टिकुलर वैक्सीन, एक, बिकॉज अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट कोरोना, राइट, ये क्वेश्चन तो आपको पूछने ही वाले हैं कि तुम्हें क्या लगता है वैक्सीन कब आएगा। देन यू शुड नो दैट WHO ने बोला कि 18 से 24 महीने का टाइम लगता है वैक्सीन आने के लिए। नाउ WHO कैन नॉट से इट हवा में, राइट? व्हाई 18 मंथ्स आर रिक्वायर्ड? देयर हैज टू बी साइंटिफिक रीजन बैकिंग इट, राइट? सो यू शुड बी नोइंग द प्रोसेस ऑफ कोरोना। तो अगर आपका ये आंसर रहेगा, सी none of the student who is talking about corona would ever think कि मुझे कोरोना के वैक्सीन का प्रोसीजर जानना जरूरी है। बट अगर आप कोरोना के बारे में बताते हो, यू कैन जस्टिफाई योर आंसर, यू नो व्हाट, WHO ने बोला 18 महीना लगेगा बिकॉज गाइस दिस इज द प्रोसेस। स्मार्टी, हाँ, अगर आप एक्सपीशन का इंटरव्यू वगैरह बैठोगे, अगर ग्रुप में बैठोगे तो भाई आप छा जाओगे, राइट? So you need to think out of the box. That's all MBA is about. MBA is all about thinking out of the box. MBAs don't do shit that the world does. MBAs are unique. They think out of the box. They do something which is epic and they do something which is extraordinary, which is more real. You gotta keep those things in your mind, right? Why is the PM Cares Fund into controversy? This time you can have questions based on Kisan. You can have questions based on sanitization. You can have questions based on social distancing. You can have questions based on economics, and you cannot give a reason or excuse कि मैं इंजीनियर हूँ, मुझे स्टॉक मार्केट नहीं आता। मेरे जितने भी बच्चे सीडीसी में मैं देखता हूँ, मैक्सिमम इंजीनियर्स आज ट्रेडिंग करते हैं मार्केट में, इंट्राडे करते हैं, कोई स्विंग ट्रेडिंग करता है। लॉट ऑफ बच्चे लोग आर इन्वॉल्वड इन ट्रेडिंग नाउ। तो बेटा आपको ये बताना पड़ेगा, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हाउ डू यू डील विद क्रिटिसिज्म? व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, इजंट इट? राइट? Wow, this is something good. All the Maharashtrians can pay attention. This is something good. How Marathi was originated. Are you familiar about Savitribai Phule? Wow, beautiful question, right? So they can ask you questions like this. Do we have anything else? Okay. Now I'll kind of take you to the. Okay, this is your cap round interview. Pretty good. Cap round interview पता नहीं ऐसा क्यों होता है cap round में, but cap round में थोड़ा सा अलग level पे जाके वो लोग पूछते हैं बच्चों को. So we've got a question. So there was this B Farm fresher.
बी फार्मेसी फ्रेशर था, उसको क्या पूछा था, they asked him about cricket as a stint, right? They actually asked him about India state policy. तो बेटा कैप राउंड में नो मर्सी, कुछ भी पूछेगा. देयर इज अ मेंटर विद अस, पूजा मैम का मेरे ख्याल से शी वॉन सम अवार्ड, कुछ स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे उन्होंने ड्राइंग में कुछ अवार्ड शी वॉन, एंड शी वाज आस्क्ड बाय द पैनलिस्ट टू ड्रॉ अ स्केच. सो शी लिटरली हैड टू एक्चुअली उनका स्केच बनाना पड़ा उसको. तो ये कुछ भी चीजें वो वहां पे पूछ सकते हैं. दे माइट आस्क यू, ओके यू आर अ गुड सिंगर, ओके सिंग फॉर अस, समथिंग लाइक दैट. ओके यू आर अ स्टोरी टेलर, टेल मी सम स्टोरीज, राइट? एनीथिंग. तो ज्यादा बाउंसर आपको आएंगे कैप राउंड में. आपके ब्लैकी के इंटरव्यू सबसे अच्छे होंगे मेरे ख्याल से. आपके ब्लैकी के इंटरव्यूज डिसेंट होंगे. आपके कैप राउंड के इंटरव्यूज बेटा वियर्ड होने ही वाले हैं. वी विल टीच ऑल दिस अगेन इफ वी जॉइन. ये हम डिटेल्ड में चलेंगे इन सेडुसिव इंटरेस्ट. आई एम नॉट टेलिंग यू टू जॉइन. इफ यू जॉइन आई विल बी मोर देन हैप्पी टू ट्रेन यू ऑल, बट अंडरस्टैंड द पॉइंट. इट इज ऑल अबाउट कन्वर्टिंग द कॉल. व्हाई एम आई टेलिंग यू दिस? बिकॉज मैं देखता हूं 7-8 हजार बच्चों को कॉल्स आते हैं. 7-8 हजार की जनता में कॉल कन्वर्ट करना एक्चुअली इजी होता है. बिकॉज आप किसी को भी जाके पूछो कि बेटा तूने क्या इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा है, वो आपको वही चीज बताएगा जो वहां पे 5,000 लोग करने वाले हैं. मुझे ऐसा लगता है कि कॉल आने के बाद कॉल कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है अगर कोई भी स्टूडेंट एक पर्टिकुलर वे में अपनी प्रेपरेशन करे तो. सिंपल सी बात है. इमेजिन करो ना यार, बॉल इज ऑलवेज गोइंग टू बी इन योर कोर्ट. आप उनको वही बता रहे हो जो आपको बताना है, राइट? तो आप किसी से भी चालू कर सकते हो, राइट? अगर स्टोरी के बारे में बात करना है, या हाय रक्षिता, कांग्रेट्स यार, व्हाट अ कैप कॉल्स. how are interviews in L like? Interviews are going to be easy. See, stop asking this question. कहीं पे भी जाके ये क्वेश्चन मत पूछना कि अहमदाबाद में इंटरव्यू कैसी होती है, लखनऊ में इंटरव्यू कैसी होती है, इंदौर में कैसी होती है. कुछ नहीं होता कहीं पे भी भाई मेरे. इंटरव्यू वैसी ही होती है जैसे तुझे चाहिए. ये वही बात होगी ना, कितने परसेंटाइल पे, कितने मार्क्स पे कितना परसेंटाइल आएगा, राइट? अब ये मत चालू करो कि वहां पे कैसे इंटरव्यू होती है. तुम्हारा इंट्रोडक्शन वुड मैटर अ लॉट, राइट? लास्ट ईयर हमारे एक बच्चे को IIM अहमदाबाद में पहला चीज पूछा था, एक जीके वाला क्वेश्चन था. ही वाज सो ब्लडी स्मार्ट कि उसने वो जीके का क्वेश्चन अपने इंट्रोडक्शन में डाल दिया और पूरा का पूरा इंटरव्यू से ड्राइव किया. इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पे एंड ऑल दैट. इफ यू रिमेंबर देयर वाज दिस गाय. एनीवे ही विल बी देयर टुमारो. आई एम कंडक्टिंग अ सेशन फॉर IIM अहमदाबाद का बच्चा लोग. द करंट स्टूडेंट ऑफ IIM अहमदाबाद, ही विल बी ज्वाइनिंग, ही विल बी ट्रेनिंग द ISP का बच्चा लोग. सो गाइस, इफ यू वांट टू ज्वाइन ISP program, you can join. It's IIM it's A2C Mentors Interview Scholarship Program. You can join. We are going to do a lot of stuff. I mean I didn't get a time to make a video because फिर लोग बोलते हैं सर आप मार्केटिंग कर रहे हो. Nothing like that. So B Pharma वाले को पूछा ट्रेड पॉलिसी क्या है. One second. If you were a Chinese official responsible to curb the effect of coronavirus, what would you do? See, यहाँ पे वो क्वेश्चन काम आएगा कोरोना वायरस की वैक्सीन का. Guys, I hope you are with me. I just explained you कोरोना वायरस की वैक्सीन का प्रोसेस. I think यहाँ पे वो परफेक्ट फिट हो जाता है यार. You could have flaunt कि देख मुझे ज्यादा पता है, right? Again, तुम्हारा कैप राउंड वैसे होता है जैसे इंजीनियरिंग के सीईटी के बाद होता था मेरे ख्याल से, एक सेंट्रलाइज्ड प्रोसेस. सेकंड बच्चा CS CFA level 1 CS oh my goodness, what a profile. Very good. Tell me about yourself. Short. अच्छा, interview 1, background B Pharma. पहला क्वेश्चन, are you nervous? Think about this. आपका आंसर क्या होगा? If I were you, I will say that yeah, I'm a little nervous because it's the first thing, this is my first interview, and I've heard a lot about CAP interviews, and I've heard that the panelists in CAP rounds are extraordinarily talented or like very smart, and they can ask you any random questions. So I'm just hoping to have a good day today, something like that. थोड़ा उनका तारीफ कर दिया, they'll feel good. Oh wow, हमारी तारीफ करी, something like that, right? You got to play with their mind anyway. Moving ahead, tell me about yourself. How does MBA fit in? Very good. What is your end goal considering you are a CA doing CS and CFA? इसकी पक्का बैंड बजी होगी बेटा, इसको बहुत क्वेश्चंस पूछे होंगे. तीसरा नंबर, BSc कंप्यूटर साइंस के बच्चों को क्या पूछा था? Where are you from? उन्होंने ही चालू करा. So you speak Tamil. So do you read? So this is called as screwing up your interview. तूने पूरा का पूरा कंट्रोल अपने इंटरव्यूअर के हाथ में दे दिया बेटा. Now he is gonna take you on a ride. For sure. Definitely, right? Move ahead. BTech fresher, tell me about yourself. You have siblings. What does your younger siblings do? Which college is your siblings in? What is inflation finance? यार BTech का बच्चा है,
उसको फाइनेंस कैसे पता होगा बेचारे को, उसमें भी इन्फ्लेशन और फाइनेंस के बारे में पूछा गया है। गाइस, these are the real interview questions. These are the real interview questions. अगर इंटरव्यू प्रिपेयर करना है और अगर रियलिटी को फेस करने की गट्स है, बेटा फाइनेंस की किताब उठाओ और इन्फ्लेशन के बारे में पढ़ना चालू करो, स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ना चालू करो, मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ना चालू करो, शेयर मार्केट क्या होता है, निफ्टी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, निकाय क्या होता है, डाउ जोन्स क्या होता है, पढ़ना चालू करो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, व्हाई एमबीए, व्हाई नॉट एमटेक, टिपिकल क्वेश्चन फॉर इंजीनियर्स। Why MBA? Why not MTech? Typical question. Which bank would you deposit money in? Listed 3 normal banks or RBI? That's very lame question. Anyway, you had artificial intelligence as subject. What did you learn in? I'm just giving you guys a kind of a एक kind of a रूबरू कर रहा हूँ आपको actual questions के साथ. So guys, there is a lot that you can do. By the way, I'll quickly tell you what is इंडिविजुअल स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जो बच्चों को ब्लैकी, एफएमएस के कॉल्स है, एसपीजन के कॉल्स है, we are teaching them by giving them a scholarship. We are only charging 700 rupees because it's a scholarship program. यहाँ पे we will be teaching you all the important concepts of marketing, finance, operations, HR. These concepts will be taught to you by students of IIM, ABC, KIL, FMS, SPJAN. Also me included, right? We will also be doing a Q&A question जहाँ पे we want to understand कि तुम्हें MBA फाइनेंस करना है, ऑपरेशन करना है, HR करना है, which has a synergy with you. तो वो वाले क्वेश्चंस भी बच्चों के शॉर्ट होने वाले हैं। We also gonna do a workshop. So there will be around about 10 workshops for marketing, 10 workshops for finance जहाँ पे हम concepts आपको पढ़ाएंगे। We intend to do current affairs कि जो भी important current affairs है उसके डॉक आपको मिल जाएंगे। This is something we are doing which nobody is doing in the market. मेरे ख्याल से probably इसके बाद हो सकता है। We will be giving you industry reports that how is the automobile industry, how is the BFSI industry, how is the pharma industry. ये चीजें बहुत ज्यादा पूछने वाले हैं बिकॉज कोरोना के 9 महीने में जिसको फाइनेंस का एफ भी नहीं पता था उसने भी ट्रेडिंग अकाउंट चालू करके ट्रेडिंग चालू करा था, शेयर मार्केट एंजॉय कर रहा था और उसने भी सुना था फार्मास्यूटिकल लीडिंग है, ऑटोमोबाइल लीडिंग है, बीएफएसआई लीडिंग है। जैसे अगर आप ऑटोमोबाइल के बारे में बात करोगे, रघुराम राजन जी का आज ही 1-2 दिन पहले का स्टेटमेंट आया था कि ओनली रिच पीपल आर बाइंग दोस कार्स बिकॉज़ एनीवे दे वांट टू काइंड ऑफ हाइड देयर टैक्सेस और ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी चीजें हैं, बट द सेल्स ऑफ टू व्हीलर्स इज नॉट मूविंग अप। सो यू रियली कैन नॉट से दैट द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज डूइंग गुड। अगर ये क्वेश्चन आपको पूछा गया कि बेटा बताओ तुमको लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बड़ी अच्छी है, वुड यू लाइक टू पुट मनी इनटू ऑटोमोबाइल सेक्टर, आप बोलेंगे हाँ सर ऑटो का सेल्स बहुत बड़ा है, बट बेटा टू व्हीलर का बड़ा है क्या? नहीं बड़ा है, बिकॉज़ इवन दैट आल्सो फॉर्म्स द सेक्टर का पार्ट, राइट? सो यू नीड टू हैव सम इंटेलिजेंस, राइट गाइस? आई होप यू आर लिसनिंग टू मी, आप बोर नहीं हो, आई होप यू गाइस आर ओके, राइट? फिर बोलना मत केतन सर आप बहुत टेक्निकल पढ़ाते हो हवा में, बेटा यही चीजें तो आईएम में जाके पढ़ोगे, मैं क्या गलत पढ़ा रहा हूं आपको, राइट? रादर आई एम गेटिंग यू रेडी फॉर इट। Fees for cap calls, यार cap calls, IIT calls, new IIMs, baby IIMs, all are 1999, all are 1999, right? So guys, if you're really keen on cracking your interviews, I would really advise you to join Seduce Mentors for GDPI. You need to be fluent in English for the interview. कोई जरूरी नहीं है कि आपको fluent होना चाहिए. You don't have to roll your R's and you don't really have to, put a kind of a accent in front of them. सिंपल सी इंग्लिश बोलो, प्यारी सी, प्रोनाउंसिएशन सही रखो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करो, यू आर सॉर्टेड। सिंपल सी बात, ओके? सो या, बिकॉज आई ऑलवेज फोकस ऑन कंटेंट यार वो। सो गाइस, या, if you're looking for a content, if you're looking for a good preparation for GDPI, you guys can start with us. We start from tomorrow. You guys can join us. There is a lot. It's going to be fun, honestly, and it's going to be a real स्टडी। यार अगर आप इतना कर लोगे, आपका 50-60% का एमबीए हम आपको यहां से ही बना के छोड़ने वाले हैं। मैं आज भी मार्केटिंग के बच्चों को पूछता हूं, दोज हु आर मार्केटिंग स्पेशलाइजेशन इन देयर बीएमएस, आई आस्क देम, बेटा कितने पीज है मार्केटिंग के? टिपिकल आंसर 4 पीज एंड 7 पीज। देयर आर 9 पीज, देयर आर 9 पीज। दुनिया आगे चली गई, हमारा सिलेबस आगे बढ़ता ही नहीं है, वही घिसी पिटी चीजें हमें पढ़ाई जाती है। डिम्ड कंपनी का कंसेप्ट था जो बेटा 2000 में ही खत्म हो गया था, आज भी आपको बुक्स में डिम्ड कंपनी का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। प्रेफरेंस शेयर्स, बी कॉमर्स, इफ यू गाइस आर हियर गिव अ शाउट आउट। बीकॉम, बीएमएस, बीबीए वाले बच्चा लोग गिव अ शाउट आउट। अगर आप यहाँ पे हो तो
प्रेफरेंस शेयर्स हमको पढ़ाया जाता था 12th स्टैंडर्ड में सेक्रेटरी प्रैक्टिस में और सॉरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स में कि प्रेफरेंस शेयर्स आर नॉट ट्रेडेबल। 2013 से प्रेफरेंस शेयर्स आर ट्रेडेड ऑन बीएससी सेंसेक्स पे। कोई सिलेबस नहीं पढ़ा था कि प्रेफरेंस शेयर्स आर ऑलरेडी ट्रेडिंग। लोगों को लगता है ओनली इक्विटी शेयर्स आर ट्रेडेबल, प्रेफरेंस शेयर्स आर आल्सो ट्रेडेबल। देयर आर 12 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पीपल हैव नो फकिंग क्लू एंड दे गो टू द इंटरव्यू। ऐसे ही इंटरव्यू में जाते हैं, राइट? और इंटरव्यू में मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, प्रेफरेंस शेयर्स ट्रेड होते हैं क्या? सब कहते हैं नो 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 बेटा होते हैं, राइट? You just need to be a little bit stand out from the crowd, guys. It's all smart game. It's all smart game. Guys, you need to understand. अच्छा ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक बेटा। आप कहाँ से आए हो? पक्का आपको किसी कॉम्पिटिटर ने यहाँ पे भेजा होगा, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। फाइन, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस वी कैन आई कैन टेक द क्वेश्चंस डेफिनेटली, राइट? No like to join the cap course, please attach the link. Sunoy Sam, I will attach the link, don't worry about it. ठीक है, रौनक बासु बेटा, ठीक है, आपके किसी कॉम्पिटिटर ने आपको बोला होगा जाके काम करो, आज का आपका काम हो गया, so good luck with that. ठीक है, you achieved something today, that's nice. You got an IIM Lucknow, how much should I pay? यार Aman, okay, I'll put the link, beta. I won't be able to talk about it. Don't put my hands into fees and all. I don't like to talk about that. I just want to mentor you guys. I just want to talk the real content. Okay, 13 months का work got IIM Indore का call. Should I focus more on acads or WorkX? WorkX is very important. WorkX is very important. Will the lecture in ISP be live or recorded? Live, and the recording of live lecture will be provided to you. Sir, expected dates for various colleges like BLACKI, FMS. Guys, you should be having your interviews scheduled by end of January. 27th से मेरे ख्याल से SPGen start हो रहा है. First week of February is a very good time to kick start with your interviews, because उसके बाद सिम्बी भी चालू होगा, तो मेरे ख्याल से ये इंटरव्यूज पहले हो जाएंगे। मुझे लगता है कैप राउंड थोड़ा सा डिले होगा, कैप राउंड बहुत लगातार चलते रहता है। I think कैप राउंड will be little bit on the larger scale, वो खींचेंगे उसको। Can I be join ISP now? Yeah, hi. IMB is eligible for ISP. When will FMS release its call? FMS के लिए guys you have to wait for some time. FMS थोड़ा delay करेगा, but FMS के call I think you should be able to get mid of February मेरे ख्याल से. Will it work for IFT2? Nayan, if you're joining my program, it should work for IFT also. It should work for IFT also, so don't worry. It's like it's not one and the same thing, but a little different. Okay. Aman, no यार, definitely ना Aman. कहाँ पे आपका क्या क्वेश्चन था? Okay, I'm sorry, I lost it. What was your question, buddy? Was it about the WorkX? Okay, ठीक है, has that person? ठीक है, no questions on the person. Guys, that's it from my side. If you're keen, you can join CDC Mentors for ISP program or IIM programs or Symbiosis or KJ Gym, all that stuff, right? Would be more than happy to train you. We start from tomorrow. Whatever I just told you, there's probably a video in the afternoon tomorrow explaining about the ISP. Tomorrow will be a session by me. We start by 9 o'clock. I intend to do kal IIM Ahmedabad ka form filling, SPGen ka form filling, and some common questions based on your resume. So we're going to do that for sure. So guys, if you want to join us, you can join us tomorrow.